Hello and welcome, my dear friends. Today we will talk about the structures of ionic compounds. Ionic compounds जो है वो हम यहाँ पे 3 types लेंगे. So we have 3 types over here. The first type is that we have AB type compounds. We have AB2 type. And then we have A to B type. A we consider here as cation and B as anion. Now, in AB type compounds, which means the ratio between cation and anion is 1:1. In case of AB2, it's 1:2 between the cation and anion ratio. It is 2:1 between cation and anion. These are the 3 types of ionic compounds. What is their structure? We will be talking about this one by one. First of all, हम लेंगे AB type compounds. So in AB type compounds, we have 3 types of structures possible. The first structure is rock salt type. That is sodium chloride type structure. The next is cesium chloride type structure. Cesium chloride type. Then the third is sphalerite. Sphalerite, or we can say zinc blend type. That is ZNS. So these are the 3 structures possible in case of AB type compounds in which the ratio between cation and anion is 1:1. First of all, हम लेंगे rock salt type structure. In each structure we will be discussing only 4 things. The first point will be which ion among the two goes for packing, whether CCP or BCC, etc., and which ion occupies voids. Then what is the coordination number of each ion? What is the formula units of AB cation anion per unit cell? These are the things we shall be discussing here. So first of all, we have rock salt type structure. So in AB category we have rock salt type. Number A, that is sodium chloride type. In this, जो Cl minus है, that goes for packing, that is FCC. So Cl minus ion जो है, which goes for FCC packing, face centered cubic packing, which means it is present at corners and faces, which means the number of particles will be 4, because you know that whenever we have FCC lattice, the particles which goes for packing have 4 particles, 4 spheres per unit cell. 4 particles per unit cell. So chloride ions will be 4 per unit cell because it goes for FCC packing. We already talked about the number of particles per unit cell in a cubic crystal. You can watch that video, whose link has been placed in the description. And जो sodium ion है, sodium ion, it occupies all octahedral voids. It occupies all octahedral voids. अब बात यह है कि how can we think of where is the octahedral void? What is the location of octahedral voids? Where is the location of tetrahedral voids? Let me have a slight picture of that over here. Suppose ये आपका cubic crystal है. So this is a cubic crystal. इस क्यूबिक क्रिस्टल में आपके पार्टिकल्स एक तो यहाँ होते हैं एट द कॉर्नर्स. ये FCC है. FCC में ही आपको समझ आएगा द पोजीशन ऑफ voids. तो यहाँ पे पार्टिकल है फेस पे, एट द टॉप फेस आल्सो, बॉटम फेस आल्सो. हर एक फेस पे आपका अपना अपना पार्टिकल होगा. तो मैंने ये 3 फेस पे दिखाया, एक राइट वाला फेस, टॉप वाला फेस, बॉटम वाला फेस. यू हैव बैक फेस, यू हैव फ्रंट फेस एंड लेफ्ट वाला फेस भी है. तो वहाँ सब जगह जो है पार्टिकल्स अवेलेबल है. अब मसला ये है कि जो बीच में पोजीशन बचती है, या ये वाला पोजीशन हम लेंगे, जो ये वाला फेस एटम है, दिस इज द फेस
जो ये वाला फेस एटम है, दिस फेस एटम टचेस दीज 4 स्फीयर्स, बट द पॉइंट इज दीज 4 स्फीयर्स डू नॉट टच ईच अदर। जो ये एज बनता है, एज, दिस एज में जो ये गैप है, दिस इज कॉल्ड OH वाइड। सो दिस इज वायर OH वाइड इज। सो OH वाइड FCC में कहाँ होती है? एक एज पे होती है, ठीक। और जो ये सेंटर है, सेंटर ऑफ द क्रिस्टल, देयर इज नो पार्टिकल एट ऑल। व्हाई? बिकॉज दिस इज FCC, फेस सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल, सो इट हैज पार्टिकल्स एट द कॉर्नर्स and it has particles at the faces only, so there is no particle at the center. So जो ये center वाली जगह ये खाली है, this is the empty space and this is basically the OH wide. So I hope you understand it, that where is the location of OH wides. So in case of FCC crystal, the wides, OH wides, octahedral wides are located at the center of the crystal, number 1, and you have at the edges. बाकी आपको पता ही है, जितने नंबर ऑफ स्फीयर्स होंगे किसी भी यूनिट सेल में, उतने ही उसमें ऑक्टाहेड्रल वाइड्स होंगे, लेकिन उसमें जो है नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड्स डबल होंगी। सो वायर इज द लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड्स नाउ? वायर इज द लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड्स नाउ इज द पॉइंट इज दैट जो आपका ये सेंटर वाली जगह है, सपोज देयर इज अ पार्टिकल। नाउ ये कॉर्नर वाला पार्टिकल और सेंटर वाला पार्टिकल, इनके दरमियान जो गैप बचती है, यहां हम देखेंगे ये कॉर्नर वाला पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल आप देखेंगे, दिस इज द पार्टिकल and this is the center position and ये पार्टिकल, इनके दरमियान जो यहाँ पे गैप बचती है, this is the gap which is called as TD wide. सिमिलरली चूंकि वहाँ पे नीचे वाले 4 कॉर्नर्स होंगे, ये वाला सेंटर पार्टिकल, ये वाला स्फीयर, इनके दरमियान भी गैप होगी, दिस इज व्हाट्स कॉल्ड टू बी टेट्राहेड्रल वाइड। ये वाला सेंटर जगह और ये वाला कॉर्नर पार्टिकल, इनके दरमियान जो गैप बचती है, दिस आल्सो कॉल्ड एज टेट्राहेड्रल वाइड। सो ये वाला सेंटर पॉइंट एंड ये वाला कॉर्नर पार्टिकल, इनके दरमियान जो गैप बचती है, दिस इज टेट्राहेड्रल वाइड। सो नीचे 4 टेट्राहेड्रल वाइड्स आएंगी, इसी तरीके से ये वाला सेंट्रल पार्टिकल एंड दिस इज द कॉर्नर, ये गैप जो बचती है यहाँ, दिस इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वाइड। सो इन नटशेल वी से दैट जो आपके ये OH वाइड होता है, दिस इज प्रेजेंट एट एजेस एंड एट सेंटर। नाउ ये जो TD वाइड होती है, TD वाइड, इट इज प्रेजेंट in between center and corner. Space in between center and corner, this is called as a tetrahedral wide. I hope you understand this. Now let's come to the point. The point is, chloride goes for FCC crystal, that is, which means it's present at corners and faces, so the number of particles, number of chloride ions per unit cell will be 4. Sodium ions occupy all octahedral wides. Since we know that जितने इसमें particles होंगे उतने ही octahedral wides होंगे, इसमें particles कितने हैं जो क्रिस्टल बनाते हैं, FCC क्रिस्टल वो 4 है, सीधी सी बात है, इसमें octahedral wides भी 4 ही होंगी, so we have 4 Na plus also. So we have 4 Cl minus ions, we have 4 Na plus per unit cell. So the point is we have 4 NaCl units per unit cell. So हमारे पास कितने फार्मूला यूनिट्स है NaCl के per unit cell? we have 4 Na 4 Cl. and अगर मैंने ये रेड दिखाया है by means of रेड हमने शो किया है, it's chloride, and जो आपका ये sodium has, since it occupies the octahedral wides, it will be present at center and at the edges. So this will be the point here, that is, this will be the particle here, that sodium, this is the sodium over here, center is the sodium over here, this is the sodium over, हर एक edge पे आप एक पार्टिकल, एक सोडियम आयन डाल सकते हैं. सो दैट गिव्स मी अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एज सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर, दैट इज रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर. सो हमेशा याद रखना चाहिए इन रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर एनाइन गोज फॉर पैकिंग. विच पैकिंग? एफसीसी. वो प्रेजेंट होता है कॉर्नर्स और फेसेस पे. उसमें 4 एनाइन्स होंगे. फिर जब 4 एनाइन्स पैकिंग करते हैं जो ऑक्टाहेड्रल वाइड्स भी 4 ही बनेंगे. सो वी हैव 4 सोडियम आयन्स. सो वी हैव 4 सोडियम 4 क्लोराइड आयन्स पर यूनिट सेल. सो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? सो वी हैव coordination is 6:6, which means 6 sodium is touched by 1 sodium is surrounded by 6 chloride ions, and 1 chloride is surrounded by 6 sodium ions. So coordination number of sodium as well as chloride is same, that is 6. So that's called as 6:6 coordination. I hope you understand this.
आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. सो ये 4 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं. नंबर 1 पॉइंट विच गोज फॉर पैकिंग, दैट इज एनाइन हियर इन केस ऑफ रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर, एंड वायर गोज फॉर कैटाइन दैट ऑक्यूपाइज ऑल द ऑक्टाहेड्रल वाइड्स. 4 ही ऑक्टाहेड्रल वाइड्स है इसमें, तो 4 कैटाइन्स होंगे. जब 4 कैटाइन 4 आयन्स होंगे तो फार्मूला यूनिट्स कितने होंगे NaCl के, दैट इज 4 NaCl यूनिट्स पर यूनिट सेल. और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है इसका, दैट इज 6. मतलब एक सोडियम इज सराउंडेड बाय 6 क्लोराइड आयन्स एंड 1 chloride is surrounded by 6 sodium ions. Now what can be the examples that this structure can be exhibited? हमारे पास कुछ examples है. For example, इसमें आते हैं halides of first A and ammonium ion except cesium. मतलब cesium halide के बगैर बाकी सारे halides जो है first A के वो rock salt type structure दिखाते हैं. Similarly, we have oxides and sulfides of second A except beryllium sulfide. ये भी दिखाते हैं rock salt type structure. We have halides of silver except AgI. मतलब ये कि अगर आप लेंगे halide first A का मतलब लिथियम क्लोराइड लेंगे, या फिर आप लेंगे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, इन सब का स्ट्रक्चर क्या होगा, रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर होगा. या अमोनियम क्लोराइड आप लेंगे, हैलाइड्स या अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम ब्रोमाइड, दे ऑल विल बी हैविंग अ स्ट्रक्चर दैट इज same as rock salt type structure, which means chloride will be present at faces and corners. So lithium or sodium or potassium will be present at the octahedral voids, which is present at edges as well as the center of crystal. And same is true with that of ammonium chloride. In case of second A, for example, we have beryllium oxide. This goes for rock salt type structure. We have magnesium oxide, rock salt type structure. We have magnesium sulfide also, rock salt type structure. So ये चीज़ें आपको याद रखनी है. या फिर हम मेरे पास सिल्वर क्लोराइड है या सिल्वर ब्रोमाइड है. They also go for rock salt type structure in which chloride or bromide goes for FCC packing and Ag occupies the octahedral voids present in that. So I hope you understand the first structure, that was rock salt type structure. Now the second structure is cesium chloride type. In case of cesium chloride type structure, which goes for packing, the point is Cl goes for primitive lattice. CSCl type structure actually makes a BCC arrangement. It makes a BCC arrangement जिसमें chloride present है at corners. Chloride is present at corners. मतलब ऐसे आपके पास एक क्यूबिक क्रिस्टल है. So you have chlorides present at corners. So these are the chlorides which are present at corners. And now we have basically cesium plus ion. This is at center of crystal. Center of crystal. मतलब arrangement क्या बना? ये center है, arrangement बना BCC. So this is basically a cesium chloride type structure. So इसमें कितने since we have chlorides at corners, तो क्लोराइड कितने होंगे? एक होगा. क्लोराइड इज 1 बिकॉज कॉर्नर्स पे खाली है. सो पार्टिकल्स ओनली एट द कॉर्नर्स विच इज प्रिमिटिव लाइट्स, जिसमें पार्टिकल खाली एक होता है. तो सेंटर पार्टिकल भी एक ही है, मतलब सीजियम भी एक ही है. तो इट मीन्स वी हैव 1 CSCl यूनिट पर यूनिट सेल. तो सीजियम क्लोराइड में कितने सीजियम क्लोराइड यूनिट्स होंगे पर यूनिट सेल? दैट्स ओनली 1. बट इन केस ऑफ NaCl वी हैव 4 NaCl यूनिट्स पर यूनिट सेल. एंड नाउ द coordination is that is 8:8. कैसे पता चला? Because zero cesium है. This is basically surrounded by 8 chlorides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Same is true with that of what? Chloride. Chloride is also surrounded by 8 cesium ions. So this is how here first 8 means 1 cesium atom is surrounded by 8 chlorides, and second means 1 chloride atom is surrounded by 8 cesium ions. So the coordination number of each cation is 8 in case of cesium chloride type structure. तो questions कैसे बन सकते हैं? आपको question कैसे बनेगा? cesium chloride type structure अगर होगा
जैसे मैं यहाँ बोलूँगा आपको, अगर आपको आएगा क्वेश्चन, आपके पास सिल्वर क्लोराइड है, बताइए सिल्वर क्लोराइड में कितने फार्मूला यूनिट्स होंगे पर यूनिट सेल। सीधी सी बात है, सिल्वर क्लोराइड मिक्स रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर, सो वी हैव 4 AgCl यूनिट्स पर यूनिट सेल। सीधी सी बात। नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर आपको आएगा व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सिल्वर इन केस ऑफ सिल्वर क्लोराइड क्रिस्टल, you will directly say the coordination of silver is 6 because it shows rock salt type structure. So all properties which are applicable to rock salt type structure are equally applicable to all these types of examples, all these crystals. आपको सपोज आएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड में, बताइए आप मैग्नीशियम ऑक्साइड में कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन क्या है, आप बोलेंगे 6। व्हाई? बिकॉज मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है इट मेक्स a rock salt type structure in which the coordination number of each cation and anion is 6. Next point is how many MgO are present per unit cell. So you will directly say that there are 4 MgO per unit cell because it shows a rock salt type structure. Same questions can be asked in case of cesium chloride type structure. Also, cesium chloride type structure is a BCC arrangement in which chloride occupies corners only and cesium occupies the center. Means the particle is chloride is 1, cesium is 1, so we have 1 CaCl unit per unit cell, and the coordination number of each ion, that's cation and anion, is 8:8. So examples can be, so for example, examples can be the halides of cyanides and halides of cesium and thallium. Cesium and thallium मतलब ये कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास सीजियम साइनाइड होगा तो स्ट्रक्चर विल बी सीजियम क्लोराइड टाइप। अगर आपके पास सीजियम ब्रोमाइड होगा, स्ट्रक्चर इज सीजियम क्लोराइड टाइप। मतलब ब्रोमाइड विल बी एट कॉर्नर्स एंड सीजियम विल बी एट सेंटर, साइनाइड विल बी एट कॉर्नर्स एंड सीजियम विल बी एट सेंटर। देयर इज 1 CaCN per unit cell and the coordination number of cesium is 8, coordination number of CN is 8. All properties applicable to cesium chloride type structure are equally applicable to these क्रिस्टल्स आल्सो। या थैलियम क्लोराइड है आपके पास या थैलियम ब्रोमाइड है आपके पास, ये जो है ये भी दिखाते हैं रॉक साल्ट दिस सीजियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर। नाउ वी हैव वन मोर टाइप स्ट्रक्चर इन केस ऑफ AB कैटेगरी, दैट इज नंबर C, जिंक ब्लेंड। जिंक ब्लेंड और वी कैन से सेफेलराइट टाइप। सो इसमें क्या है, इसमें जो है S2- इट ऑक्यूपाइज FCC क्रिस्टल। जब FCC क्रिस्टल बनाता है मतलब इट इज प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एंड फेसेस। मतलब इसमें कितने पार्टिकल्स होंगे, जब भी आपका पैकिंग बनेगा FCC तो पार्टिकल्स होंगे 4, मीन्स देयर आर 4 S2- आयंस पर यूनिट सेल। नाउ वायर गोज द जिंक आयंस, Zn2+ जो है दे ऑक्यूपाई ऑल्टरनेट TD वाइड्स। मतलब ये कि आपको पता होगा जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, सो इफ पार्टिकल्स आर 4, so OH wides will be 4 but TD wides will be 8. I told you earlier in previous videos. So अगर पार्टिकल्स 4 होंगे जो पैकिंग करते हैं, ऑक्टाहेड्रल वाइड्स उसमें कितने होंगे, 4 ही होंगे जितने पार्टिकल्स होंगे, लेकिन टेट्राहेड्रल वाइड्स डबल होगा। अगर पार्टिकल्स 10 होंगे, ऑक्टाहेड्रल वाइड्स भी 10 होंगे, लेकिन टेट्राहेड्रल वाइड्स जो है वो 20 होंगी, सो इट्स डबल। नाउ सिंस S2- गोज पर FCC पैकिंग, तो पार्टिकल्स 4 है सल्फाइड आयंस। जब सल्फाइड आयंस 4 है, इसका मतलब ये हुआ इसमें ऑक्टाहेड्रल वाइड्स कितनी होंगी, ऑक्टाहेड्रल वाइड्स विल बी 4 बट टेट्राहेड्रल वाइड्स जो हैं दे विल बी 8। तो पार्टिकल S2- कहां से है, फेसेस एंड कॉर्नर्स, सो इट इज हियर S2-, इट्स हियर S2-, सल्फाइड आयन यहाँ पे है कॉर्नर्स पे, एंड इट इज आल्सो प्रेजेंट एट फेसेस। सो यहाँ पे फेस एक दिखाऊंगा मैं, सो इट इज हियर सल्फाइड, इट्स हियर सल्फाइड। अब जिंक कहाँ गया है, ऑल्टरनेट TD वाइड्स। आई टोल्ड यू अर्लियर दैट द पोजीशन ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड इज इन बिटवीन कॉर्नर एंड सेंटर। सेंटर की जगह, सेंटर से आप खींचो डिस्टेंस अप टू कॉर्नर पार्टिकल, जो बीच में वाली डिस्टेंस आती है, इन बिटवीन डिस्टेंस ऑफ सेंटर एंड कॉर्नर पार्टिकल इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वाइड। सो दिस इज हियर टेट्राहेड्रल वाइड। सो ये कितने हैं, ये 4 है, नीचे 4 ऊपर 4 हो गए 8 टोटल में। लेकिन ऑक्यूपाई कितने करते हैं, ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट का माने ये है कि एक पे डालो फिर दूसरे पे नहीं, मतलब 4 ही ऑक्यूपाई होंगी, मतलब द पार्टिकल्स आर 4, सो देयर आर 4 जिंक आयंस ओनली। So how many formula units are there? There are 4 Zn(S) per unit cell. कैसे पता चला? Because there are 4 zinc ions only and 4 sulfide ions only per unit cell. Had there been all TD wides occupied, then it will have been 8. But alternate means one after the other, so only 4
tetrahedral voids among 8 are being filled. So we have 4 ZnS per unit cell. And the coordination number, coordination कितना होगा 4:4. मतलब ये कि हर एक zinc is surrounded by 4 sulfide ions and each sulfide is surrounded by 4 zinc ions. So coordination number of each zinc ion as well as that of sulfide ion is 4. Examples can be, examples जो इसमें है that is basically halides of copper and silver iodide भी आता है और बेरिलियम सल्फाइड भी आता है, जो एक्सेप्शंस थे in case of rock salt type structure. So silver iodide and beryllium sulfide show basically zinc blende type structure, and halides of copper में आता है example copper chloride, copper bromide, copper iodide. ये जो है all these show zinc blende type structure, which means iodide will be goes for packing FCC. There will be 4 iodides and copper occupies alternate TD voids. Alternate TD voids. So they are also 4. So we have 4 copper iodide ions per unit cell. And the coordination number of copper will be 4. Coordination number of iodide will be 4. I hope you understand it. कैसे 4 होगा? Because it occupies tetrahedral void. जब ये tetrahedral void में जाएगा, tetrahedral void is formed by 4 spheres. So इसके इर्द गिर्द कितने sphere होंगे? 4 ही होंगे. So coordination number is 4. इस तरीके से हम ये करते हैं. Now the next is important point मैं आपको यहाँ पे बोलना चाहूंगा, that is diamond जो होता है, diamond का structure same होता है. It's having a structure same as that of zinc ZnS, zinc blende. मतलब ये कि जो स्ट्रक्चर जिंक ब्लेंड में है उसी का स्ट्रक्चर डायमंड का होता है, वही स्ट्रक्चर डायमंड का होता है. जिंक ब्लेंड कौन सा स्ट्रक्चर दिखाता है? जिंक सल्फाइड स्ट्रक्चर मीन जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर जिसमें सल्फाइड प्रेजेंट है एट कॉर्नर्स. इसका मतलब ये हुआ जो डायमंड कार्बन का बना है, सम कार्बन्स विल बी एट goes for FCC packing, मतलब faces and corners, and some carbons occupy alternate TD voids. Alternate TD voids. So there will be coordination number of carbon will be 4:4. हर एक कार्बन का coordination number 4 ही होगा, और जो है 4 ही coordination number होगा. And next point is, चूंकि यहाँ पे जिंक आइनस 4 है, सल्फाइड भी 4 है, so there is 4 जिंक ZnS per unit cell. लेकिन जिंक और आयन डिफरेंट 2 है इनके सब जिंक ब्लेंड, लेकिन कार्बन सेम है, एक ही है. मतलब there will be 4 carbons and 4 carbons. In total there will be 8 carbons per unit cell. Because जिंक के बदले भी है कार्बन, सल्फाइड के बदले भी है कार्बन. जब 4 सल्फाइड 4 जिंक है, मतलब 4 कार्बन, टोटल में कितने कार्बन हो गए? 8. तो देयर आर 8 कार्बन्स पर यूनिट सेल इन केस ऑफ डायमंड, हैविंग अ स्ट्रक्चर सेम एज दैट ऑफ जिंक ब्लेंड टाइप स्ट्रक्चर. अब जो ZnS आपका है, वन मोर पॉइंट यू शुड नोट, दैट इज जो आपका ZnS है, इट शोज बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स. वन इज जिंक ब्लेंड, जो हमने अभी डिस्कस किया, जिंक ब्लेंड अभी डिस्कस किया. दूसरा होता है वर्डजाइट. फर्क क्या है इनमें? फर्क यह है कि इट गोज फॉर CCP पैकिंग और FCC पैकिंग, क्लोराइड्स, ये सल्फाइड सॉरी, एंड इसमें जो सल्फाइड है दैट गोज फॉर HCP पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. दिस इज द ओनली डिफरेंस. रेस्ट इज सेम. So zinc sulfide shows actually 2 types of structures. One is zinc blende, I told you right now, जो हमने डिस्कस भी करा, and wordslide is the another structure of zinc sulfide in which S2- does not go for CCP or FCC packing, it goes for HCP packing, hexagonal closed packing. Rest things are same, मतलब there are 4 ZnS per unit cell, there are 4 ZnS per unit cell, and in this zinc ions occupy alternate TD voids. Same is here, zinc ions occupy alternate TD voids. Now this was about the AB type structures. I hope you understand it. In the next video, hopefully we will be talking about the AB2 and A2B type structures. Till then, take good care of yourselves. Thank you very much.